Okay, जी, Bismillahirrahmanirrahim. Today is basically the class of international business. हमने जो टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं डेफिनेटली उसमें द फर्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट फेसिंग इन द इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस ये हमारा फर्स्ट सॉरी फर्स्ट सेशन है जिसको हमने कवर करना है अपनी उसमें टुडे ऑनलाइन लेक्चर में या टुडे ओनली सेशन में अच्छा सेकंड जो हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और द रोल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस थर्ड हमारा ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन एंड सोसाइटी play a very important role for the development of any international business and national business. फिर हमने इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा सा डिस्कस करना है द क्रॉस नेशनल एग्रीमेंट्स जो हमारे हैं उसको हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में अच्छा जी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग अस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नंबर 1 हम जो we call that the topic number 1 is the political and legal environment facing in the international business. Definitely, the political and the legal systems and the legal environment are the basically play a very important role for the development of international and national business. Yeah, and there are some international political and legal factor influencing on international business operations. Definitely, the one of that the role of government in the society, and definitely the role of government in society is play very important role for the national international business, and the political ideologies and definitely the political ideas and ideology systems play a very important role for the international business. Political risk, definitely in the developing countries, there are so many political risks are there. Legal environment and operational and strategic legal issues, and definitely the legal issues play a very important role for the development of any national and international business are there. Political and policy legal practices, definitely the culture play a very important role, the economic forces play a very important role, the geographical influence play a very important role for the development of any society, any things are there. One thing is very much important before we going to the political and legal environment facing in business. The individualistic society, individualism, and basically the collectivism is play a very important role for philosophical orientation of yeah, political and legal environment facing in international business are there. Individualism definitely referred to rights and the role of the individuals, and collectivism is basically the primary the rights of the role rights and the role of the community society. Definitely individualism is based on the individual society, the individual systems, and the collectivism is basically the base on the whole society, the whole systems are there, the whole system occur in our society are there. Firstly, start with the basically the political ideology. Definitely, the political ideology, democracy, and definitely the systems play a very important role for the development of international and national business and any type of the business. Either this is a small medium enterprises are there, either the large institutions or large multinational corporations are there. The political ideology play a very important role for the system of any developing and developed countries are there.
Definitely, the defining the features of democracy and the freedom. The factors for evaluating the freedom include the political right and civil liabilities are there. Definitely, that's the two thing is very much important. The democratic systems involve widely participation by the citizen in the decision making process. Definitely, on the basis of the citizen, on the basis on the participation of citizens, they make the decision and decision making process. They run the decision making process on there, and definitely that democracy defining the features of the freedom and factor for evaluating the freedom includes political right and the systems are the collect on the basis of the basically the collectivism are there. The other systems, totalitarianism is basically the system restricted the decision making to a few individuals. That's the basically totally based on the individualistic philosophy. Are the individual peoples are play very important role. Are the decision makers. Are few peoples are the basically the decision making for the society. There are several engines of the democracy are there. There are several engines power that this way to in democracy we focus on the three of the most of the systems are there of the democracy as a filler of many. They definitely to collective regimes and we call that to deliver economic progress lead to deepening and problems, citizenship problems. They begin the challenges right of the government to govern. And secondly is because of the democracy benefits from the informal public and with the cross of media by restricted on the free speech, improved communication technology, and largely via the internet. And definitely nowadays, all over the world, is basically the media is very open to write, to open to speak, open to free speech is a very play very important role. Yeah, the third is many people is comparing democracy in the beliefs that political systems and lead to economic liberalization and definitely turn improved standard to living. Achha, okay, let's basically the sources and consequences of the political risk are there. The definitely international war and the civil war is basically the problem of the democracy systems are there and the risky factors are there and definitely the nationalization and play very important role for the risk of the political and source and consequences of political risk. The harm action against the people is the basically the source and consequences of the political risk are there. The harmful action against the peoples and restrictions on are the play very important role and source of the political risk are there. The differencing point of view that's again the basically they play very important role. The source and consequences of the political risk are there.
the discriminatory taxation policies. Again, the taxation policy play a very important role for the political risk. And definitely, we know about what is basically the political risk, the risk that political decisions or events in the country negatively affect the profitability or sustainability and environment are there. The investment, yeah, definitely political decisions, events, the country negatively affect on the political profitability, and definitely the sustainability and investment are there. The primary type of the political risk from the least to most, definitely that is a systematic approach are there, the procedural approach are there. In the system is basically the if the system are corrupt, again the political risk are there. Yeah, and definitely the other procedural things play a very important role for the political risk and political or environmental facing in the international issues are there. The other thing is very much important, the legal environment of any country, the legal system in the mechanism for creating, interrupting, and enforcing the laws in the specialized, definitely that's linked with the modern legal systems, that link with the criminal law and the civil and the commercial law, and they play a very important role for the development of legal systems in facing in, legal systems, and definitely the legal environment facing in the international business. Types of legal systems, that is the common law. The common law is based on the traditional judgment, is based on the basically the positions, the case law, we call that existing case laws. And definitely the civil law, definitely the civil law is a systematically a codification of the law, and such system of the political officials are there. That's the mixed systems between the common and this and civil law. We basically that's the basically contribute in the international business are there. Uh, Definitely, democracy generally influences the political and social stability, and at the expense of individual freedom, and definitely the freedom for the individuals, the freedom for the society. Uncertainty about the basis of law in the particular country create the challenging situations for the managers, for the international business stakeholders, for the multinational corporations. Definitely, that play very important role. Operational concerns that face managers worldwide, or stakeholder worldwide, including the starting in business. Law हमेशा स्टार्टिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, इंटरिंग एंड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, आप जब कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे होते हैं, इंटर कर रहे होते हैं, दैट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. हायरिंग एंड फायरिंग, लीगल लॉज आपको बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस जो ऑपरेशंस में हर्डल्स क्रिएट करते हैं. इसमें हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ द लोकल वर्कर्स, आपको कुछ परसेंटेज ऑफ द लोकल वर्कर्स यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू इनकलकुलेट the local persons hire, and definitely the hiring and firing legal systems of that country play very important role for your on your business. Closing down the business, again that's play very important role if you close down the business, and definitely the legal systems are the basically influencing on the why you are closing. That's basically other things are play very important role. And definitely and that between is very much important. Intellectual property laws is the basically against again the systems are the develop to develop the legal system.
What is the basically intellectual property law refer to right to control and drive the benefits from writing, copyright, interventions, patents, and trade secrets, and definitely the trademarks are there. There are so many companies all over the world. They are more focusing on the basically the international system, international property rights, and definitely that intellectual property rights is copyrights, patents, trademarks, and trade secrets. That all are the basically the link with that. Yeah, and one thing is very much important, the cultural attitudes influencing the protection of intellectual property rights, and notably individualistic society are more good than the collective society or the collectivism are there. And these systems are they protect the international they protect the intellectual property rights. They protect the patent secrets or the rights of the secrets of the any country are there, any society are there. And definitely in this chapter or session of the we discuss the political legal systems across the both countries, and definitely the political systems the dimensions are there. And these political systems, if the legal systems or political systems are strong in any country, definitely the international business are moving there. And they are more profitable for the local and host country. The other chapter or session is not a chapter, this is a session of economic environment facing business, that to understand the importance of economic analysis and the foreign market, and to identify the major dimensions of international economic analysis are there. And definitely the macro or micro indicators play a very important role for the international business. And definitely nowadays basically the environmental economics, and they play a very important role for the international business are there. A country economic policies and leading indicator of the government goals and its plans, use of economic tools and market reforms. And definitely in terms of economic growth and stability, required the basically the country and state objective are there. And definitely to inculcate to develop that yeah, the stability and growth that required for any country. And that's why the company managers study the economic environment to estimate how the trends affects their performance. And definitely इंटरनेशनल बिजनेस में जब भी कोई आएगा तो वो सबसे पहले ये लर्न करेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड्स वो एस्टिमेट करेगा ट्रेंड्स को मेजर करने की कोशिश करेगा फॉर द इंटरनेशनल. The current country economic policies are the leading indicators of the government goals and its planned use of economic tools and market reforms. Economic development directly impact on the citizens, managers, policymakers, and institutions, and definitely they play a very important role. Key economic forces includes the price stability, market, capital market factor, endorsement, and market size, and definitely the public policy play a very important role. The economic factors affecting international business operations. Number one is economic analysis, economic indicators, economic systems, economic freedom, and that freedom to the open market or market to the economy. Definitely, yeah, that's okay. जी, sorry, आवाज due to the internet.
Acha ji, now we are studying the basically the key economic forces includes the price stability. Every country, every international business, every stakeholder are we call that top management team that required the basically either the country have the price stability are there or not. सबसे पहले जो इंडिकेटर हम किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ये देख रहे होते हैं दैट इज द प्राइस स्टेबिलिटी आर देयर तो इन डेवलपिंग कंट्रीज में तो प्राइस स्टेबिलिटी इज वेरी मच प्रॉब्लमिस्टिक लेकिन डेवलप कंट्रीज में हमेशा प्राइस स्टेबिलिटी सबसे पहला इंडिकेटर है इकोनॉमिक को जज करने का ये इकोनॉमिक फोर्सेस को की इकोनॉमिक फोर्सेस इंक्लूड्स जो इसमें है उसमें प्राइस स्टेबिलिटी नंबर वन पे है दूसरा कैपिटल मार्केट कैसी है मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है आइदर इज अ स्ट्रक्चरल मार्केट और अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट फिर फैक्ट मार्केट का साइज कितना है आइदर इज अ बिग मार्केट और स्मॉल मार्केट मार्केट की अडॉप्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है public policy, public correction क्या है against that product that play very important role. Element for the economic environment में हमारे सबसे पहले जो the element of the economic environment that इसमें जो सबसे पहले environment है that's basically cross national income आपका GNI and definitely GDP and the gross domestic products definitely we already studies about that managers and top management teams improve the useful of the gross national income by adjusting it for the number of people, growth rate, and the cost of the living in a country that play a very important role on the basis of the improving the power of GNP and per capita conversion that play very important role for the development of any country and purchasing power, priority, rate of change, degree of human development, and that's all are the basically play very important role for the economic environment facing economic environment of any country to develop any uh, for the development of the economy. The Human Development Index play nowadays play very important role. The combination combining indicator to real purchasing power, education, health to give a more comprehensive measures of the economic development. Nowadays, the human capital, we call that human capital development or human development capital play a very important role. The knowledge, skills, ability, the standard of living of any country play a very important role for the development of anything, and that's again the we are studying the basically economic environment challenging facing in the international business and definitely the human development index play very important role to gauge the purchasing power, education, and health to give the more comprehensive measure of the economic development. And human capital development and human development is index is play a very important role for the development of any nation and nation of the economy are there. The other features of the economy, the number one feature of the economy is inflation. Inflation is a measure of the increase in the cost of living. If the cost of living of any society is basically high, is basically the inflation rate. We call that's basically the inflation. Inflation, the mainstream of economics, inflation results. Definitely, we call that the inflations are there. The second features of any economy is unemployment. Unemployment is a measure of the number of workers who want to work but do not have jobs. Unemployments are the basically the base on the
the persons a society working, willing to work, but unfortunately the jobs are not there. Again, the working age population play very important role. Labor rules and regulation play very important role. Problem in measuring in unemployment, definitely that's play very important role for uh, the other thing is the key features of an economy is income distribution. Income distribution is a description of a population that are at various level of income. The lower middle class, the middle class, and the definitely the upper and upper middle class are there. The poverty play very important role for the development of any environment, the development of any economic environment. Okay, I'm sorry, इंटरनेट की वजह से शायद थोड़ी माइक में या वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है. डेफिनेटली मैं इस कैमरा को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक दैट्स द बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ. अच्छा जी, uh, we are studying the basically the what is the power, the other economic feature is basically the poverty are there. Definitely, the poverty is basically the gap between the rich and poor peoples, and virtually every country in the world have basically the system of the rich and poor society. And how to reduce basically the poverty and the labor cost are there. The labor and total cost को आप अगर कम कर दे तो definitely that's again the productivity increase कर दे. The other key factor of the economic is basically the productivity efficiency of any country, any society. The productivity measure the efficiency which goods and services are produced. कि कौन सी गुड एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें, दैट्स अगेन मेजर बाय द प्रोडक्टिविटी. Companies monitor the balance of payment to watch the factor that include lead to currency instability or charge the government policy. Definitely they know about the government policy, and companies nowadays, organization, the multinational corporation willing to the systems are there to learn the systems. The other types of economic systems. Economic system is basically mechanism that deal with the production, distribution, consumption of the goods and services, and definitely the economic system play very important role for the development of any society and the international and national business, and that play very important role. Other one is the command economy and mixed economy. The market economy encourages the open exchange of the goods and services between the producers and the consumers. And the command economy, all the dimensions of the economic activity are determined by the central government plan. Definitely, they are fully controlled. And the mixed economic system combines element of the market and command economic systems whereby the both government and private enterprises influencing the production, consumption, investment, and the saving are there. And
Definitely, the economic systems play a very important role for the development of any international business and the international society of the things are there. Definitely, the economic environment of a country play a significant role in the establishing and attractiveness of foreign investment. And if the economic environment is good of any country, definitely that play very important role for the development of any and attraction of any foreign investor investment are there. अगर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर किसी भी कंट्री के ठीक होंगे तो डेफिनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्टली अट्रैक्टिंग टू दैट कंट्री इसमें दैट्स बेसिकली अगेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी कमेंट्स या आपकी जो क्वेश्चंस है वो प्लीज जरूर मुझे आने चाहिए ताकि मैं उसको मजीद एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को एनी क्वेश्चन there be participants any questions about that okay economic analysis is a look at the several indicators of the economic environment which influencing giving to how the local conditions required adjusting analysis and interpretation that's play a very important role manager recognize that power of economic analysis definitely identify that the best possible indicators that understanding how they work in the isolation and effectively and definitely the GNP, GNI, and GDP play a very important role for the for the development of any country, and definitely the balance of payments play a very important role for the development to attracting the international national player. Yeah, nowadays, the managers, the top management teams, definitely they are focusing on the economic performance of any country and they are focusing on the uh, uh, society inflation rate society unemployment society poverty society debits and the society balance of payment they know about जब तक वो उसे देखेंगे नहीं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स आपके पास इंटर नहीं हो पाएंगे डेफिनेटली जब नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके पास नहीं आएंगे तो आपकी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या आप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस the biggest organizations so वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी इकोनॉमिक सिस्टम्स डेफिनेटली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी जो प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अट्रैक्टिंग ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो आप चाह रहे होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द नेशनल कंजम्पशन लेवल को फुलफिल करने के लिए आपका
हमारा एक किसी भी प्रोडक्ट का एक नेशनल कंजम्पशन लेवल है अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। हमें रिलीजियसली कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं या हमें कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए, या हमें कल्चरली कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं या हमें रिक्वायर्ड होती हैं। दैट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, एनी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो दैट ऑल आर द बेसिकली जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर्ड है उसमें से ऑल पार्टिसिपेंट्स उसमें ये होता है कि हमें अगर इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर होना है या किसी ने यहाँ पे होस्ट कंट्री में इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, हाँ, तो क्रॉस नेशनल जब तक हम अगर क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएं, अगर हम नेशनल टू इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ मूव हो, तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने इम्पोर्टेंट रोल हमारी कर रही होती है, वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंटरनेशनल बिजनेस आर देयर। तो ज्यादातर ये मार्केट इकोनॉमी पे या कमांड इकोनॉमी पे बेस कर रही होती है। दैट्स डिपेंड ऑन द बेसिकली द कमांड एंड मार्केट इकोनॉमी पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं, और दैट इकोनॉमिक सिस्टम्स पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं, फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो क्या उसको किस तरह लेके चलती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जब भी आपके पास आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब भी आपके पास आती है, तो वो फर्स्टली आपकी जो कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम्स है उसको बहुत थॉरली स्टडी करती है। या जब भी आप इंटरनेशनल नेशनल टू इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ मूव करते हैं, तो आप उस कंट्री जो होस्ट कंट्री है, आप उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट्स बेसिकली द इकोनॉमिक सिस्टम्स आर देयर। अच्छा, फिर द अदर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, द अदर सेक्शन जो हमने डिस्कस करता था, दैट इज बेसिकली द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी आर देयर। ग्लोबलाइजेशन क्या प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सोसाइटी डेवलपमेंट आर देयर। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स in evaluating the activity of the multinational corporations through the globalization that's playing, ये चीजें सीखनी या इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जब हम ग्लोबली ऑपरेट करते हैं या इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, तो व्हाट्स द बेसिकली द सोसाइटल प्रॉब्लम आती है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, सोसाइटल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइज्ड बिजनेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बिहेवियर क्या है, सोसाइटल बिहेवियर क्या है, होस्ट कंट्री कैसे वेलकम कर रहा है टेक्नोलॉजी को, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स बेसिकली द होम एंड होस्ट कंट्री इन्फ्लुएंसिंग द एलोकेशन ऑफ द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली होम कंट्री होस्ट कंट्री रिसीव कर रहा होता है foreign direct investment through the multinational corporations, and the pressure groups to push to restrict the activity of multinational corporations at the home and abroad. कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं हमें, जो पुश करती हैं कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में मूव करें या इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रो करें, जाए इंटरनेशनल कंपनी। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी मूव करती है, तो वन थिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी कि वो कंपनी मस्ट सेटिस्फाइड करे स्टेक होल्डर्स को, बस सेटिस्फाइड करे एम्प्लॉइज को। ऑल एम्प्लॉइज आर डेफिनेटली द स्टेक होल्डर्स, द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स एंड द सोसाइटी। तो
Yeah, when the multinational corporations are offering have to offer any host country, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो द ऑल स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, सबको डेफिनेटली दे मस्ट द कंपनी मस्ट सेटिस्फाइड द ऑल कंडीशंस, द ऑल सिस्टम्स आर देयर. अच्छा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैव टू ऑफर, क्या ऑफर करती है होस्ट कंट्री को? इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रही होती है वो, लिंक द लोकल कंपनी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही होती है जिसे आप कैपिटल फॉर्मुलेशन कहते हैं. वो कैपिटल को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज होती है. डेफिनेटली एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमेशा ये देखती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज द लोकल, वो मर्जर्स, एक्विजिशंस. इंटरनेशनल लॉ भी है, जब आप होस्ट कंट्रीज में जाएंगे तो आपको लोकल मर्जर्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको लोकल मर्जर्स के थ्रू लोकल मर्जर्स करने पड़ेंगे. Hey, what MNCs have to offer the host country. The other thing is very much important: the human resource training, salaries, employment, managerial skills develop कर रहे होते हैं, technical skills develop कर रहे हैं, new technology आप दे रहे होते हैं. तो definitely that play very important role for the development of any country, any society. अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब भी किसी भी कंट्री, होस्ट कंट्री में जाती हैं तो टेक्नोलॉजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आर एंड डी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमेशा होस्ट कंट्री को आर एंड डी दे रही होती है. इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन हो रही होती है, अपग्रेडिंग हो रही होती है. इस वजह से न्यू कैपिटल इक्विपमेंट डेवलप हो रहे होते हैं आपके कंट्री में. तो इंटरनेशनल कंट्रीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब भी किसी होस्ट कंट्री में जाती हैं तो दैट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रिसोर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टेक्नोलॉजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ट्रेड एक्सपोर्ट हो रही होती है आपकी, एक्सपेंशन हो रही होती है, लोअर कॉस्ट इंपोर्ट आपके पास हो रही होती है. तो अगेन that play very important role for the what multinational corporations have to offer. So multinational corporations then offer the trade are there, and definitely the environment. एक जो ड्रॉबैक है जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आपकी कंपनी, आपकी आपकी उसमें आती है, आपके होस्ट कंट्री में आती है, उसमें पोल्यूशन इज बेसिकली द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही होती है आपकी. एक चीज बड़ी अच्छी है कि वो कंपनी वाइड स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर रही होती है आपकी. जब भी एफडीआई आपकी कंट्री में थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एफडीआई आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होस्ट कंट्री को क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है? वो इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफर कर रही है, टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, ट्रेड ऑफर कर रही है, एनवायरमेंट ऑफर कर रही है. तो ये मस्ट सेटिस्फाइड, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को चाहिए कि मस्ट सेटिस्फाइड द स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स एंड द सोसाइटी आर देयर. तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, दैट्स द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एंड डेफिनेटली दैट economic impact play very important role for the development of any society. Any question? अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस में, ये ग्लोबलाइजेशन एंड सोसाइटी के सेशन में, कि होस्ट कंट्री क्या क्या चीजें गेन कर रही होती है और क्या क्या चीजें लॉस उसको कर रही होती है. जरूरी नहीं है कि जहां पे मल्टी कॉर्पोरेशन आ रही है वो सारी चीजें गेन ही कर रही है, वो कंट्री सारी चीजें गेन कर रही है. वो कंट्री हो सकता है कुछ चीज लॉस भी कर रही हो. अगेन द डिबेट ऑफ दैट, कि क्या क्या चीजें होस्ट कंट्री गेन कर रही है और क्या क्या चीजें होस्ट कंट्री लॉसेस लॉसेस क्या क्या है आपके. डेफिनेटली होस्ट कंट्री जो चीजें गेन कर रही होती है वो प्रोडक्शन फैक्टर है, आपकी कंट्री का प्रोडक्शन फैक्टर इंक्रीज हो जाता है. एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज जो है वो गेन कर रहे होते हैं आप.
अपग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी, आप ज्यादा, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो सिटीजन है, वो ज्यादा, आपका जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड हो जाएगा। रिसोर्स अपग्रेडिंग ऑफ द रिसोर्स क्वालिटी, डेफिनेटली द क्वालिटी अपने आपको, जैसे हम कहते हैं क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएंगे। इससे पहले सोसाइटी जब क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होती तो वो सोसाइटी प्राइस कॉन्शियस होती है। तो डेफिनेटली जैसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आपकी कंट्री में आती हैं तो यू आर मोर द बेसिकली the quality conscious, and definitely multinational corporations आपको इंश्योर करवाती हैं कि क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स और स्टैंडर्ड सिस्टम और क्वालिटी स्टैंडर्ड सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए आपकी कंट्री में, या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट डेवलप करें। व्हाट व्हाट द होस्ट कंट्री लॉसेस, हाँ डेफिनेटली लॉसेस हो सकते हैं कि जिसमें आपकी जो लोकल, एक एक हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, डिस्ट्रॉय लोकल एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर। किसी भी कंट्री का एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर होता है तो अमूमन आप वो लॉस कर जाते हैं। आपके लोग एंटरप्रेन्योर्स की तरफ नहीं जाते, एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। यार किसी तरह मेरा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में मेरी जॉब हो जाए, मुझे एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर पे वो ना करना पड़े। ये अगेन द बेसिकली द बिगेस्ट प्रॉब्लम आर देयर कि डिस्ट्रॉय लोकल एंटरप्रेन्योरशिप्स। डेवलपिंग कंट्रीज को ये बहुत प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ती है। और अगेन जो आपकी लोकल R&D है वो खत्म हो जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का जो बिगेस्ट लॉस है होस्ट कंट्री को, वो ये भी हो सकता है कि लोकल कंपनीज खत्म हो जाए, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी काफी लो होती है, तो वो उससे बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। जब बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली वो लोकल एंटरप्रेन्योर्स को डिस्करेज करते हैं। तो अगेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खतरे में पड़ जाती है जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होस्ट, किसी भी होस्ट कंट्री में जब वो मूव कर रही होती है। एथिकल, द फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर, अगेन डेफिनेटली इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि द फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री आर देयर। तो उसमें आपके बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हम कल्चरल फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर कह रहे हैं, दैट्स प्ले अगेन द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी आपकी डेवलपमेंट के लिए। Again, agree with the statement of that. Okay. जी जी, ethics and the environment play a very important role. Companies nowadays, natural resources generated through air, water, and waste, and manufacturing products such as the basically that generate the pollution need to concerns about the environmental factor, definitely is play a very important role for the environment. And we already discussed the environmental conditions disturbing the multinational corporations, disturbing the environmental conditions are there. Sustainability, what is sustainability? Sustainability is basically the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs, and definitely by taking into the account and what is the best of the people and the environment. And global warming इसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त पे important role play कर रही है। You know about the global warming, about the result of the greenhouse gases, and definitely the atmosphere's disturbance, the collapse of the environmental conditions and the pollutions are there.
Any other comments or questions are there, please? Any other comments and the questions are there? Ethical dimensions are label conditions, pressure for the ethical behavior with the respect of to workers. कंज्यूमर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर बिहेवियर होता है मीडिया नाउ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द pressure behavior pressure for unethical ethical behavior with the respect to the workers and the co-workers are there global supply chain में NGOs का बहुत important role है गवर्नमेंट itself बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है ट्रेड यूनियंस WTO यूएनओ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस पे आ गया है कि वर्किंग चाइल्ड लेबर्स की वाले हवाले से भी इसको बड़ा देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चाइल्ड लेबर ना हो रही हो द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर तो ये भी एक डेफिनेटली द बिगेस्ट प्रॉब्लम लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में मजबूरी है लोगों की सोसाइटी की वो चाइल्ड लेबर से काम करवाएं द अदर देयर इज नो एनी अदर ऑप्शंस आर देयर डेफिनेटली हाँ, आप जी कोड ऑफ कंडक्ट इन्वॉल्व इन द फोर डायमेंशंस डेफिनेटली इसके कुछ डायमेंशंस हैं जिसमें global policies that must be complicated that must be compliances with what the company operate communication code is very much important play very important for multinational corporations what makes a good internal code of conduct communicate करें आप supplier को employer को customers को subcontractors को इंश्योर करें कि पॉलिसी जो भी कैरी आउट करी जा रही है वो सोसाइटी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक की कंडीशंस गुड गुड कंडीशनल फैक्टर्स में हो इंश्योर करें कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको इंश्योर करें दैट हैव टू मेजर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ द सोसाइटी आर देयर any questions any comment of the globalization in society in international business okay how summarize of the globalization and society summary of the globalization and society FDI is a major source of the capital and expertise जो आपकी कंट्री में होस्ट कंट्री में बेनिफिट्स लेके आती हैं that MNCs में affect the country's balance of payment आपके पास आ रही होती है growth आपके पास आ रही होती है employment आपके पास आ रही होती है तो definitely MNCs हमेशा FDI के थ्रू आपके बहुत सारी चीज़ों को मेजर जो चैलेंजिंग इश्यूज होती हैं किसी भी सोसाइटी या किसी भी इकोनॉमी में उस पर कंट्रीब्यूट कर रही होती है कंपनीज को डेफिनेटली कंपनीज को चाहिए कि वो इंटरनेशनल बिजनेस में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए द कंपनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फुलफिल नहीं करेगी तो डेफिनेटली दैट प्ले मेजर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी सोसाइटी में और थिंग्स आर the next session is basically जो आपने रखा हुआ था that's basically the international trade or the objectivity जो some trade theories prescribe that basically the government should influence the trade patterns are there the other trade objectives strategies and main of operating are there तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड एंड सर्विसेज की इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड एंड सर्विसेज की जो ट्रेड है दैट्स बेसिकली द इंटरनेशनल ट्रेड एंड the factor of mobility are there definitely is play a very important role for the development of any society any country
ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस तरह कर रहा है कि आपकी कल्चर डिस्टेंस कम हो रहे हैं थ्रू द कंट्री, आपके रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं द अदर कंट्रीज, दैट्स अगेन द बेसिकली द बिगेस्ट। अच्छा, हम 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, देन वी कंटिन्यू द सेशन।
Okay, Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the international trade, and definitely the trade play a very important role for the development of any country and any society, and especially is the international trade is very beneficiary for the developing countries nowadays, and definitely the production factor play a very important role for any country. Capital, labor rate, and definitely the technology. Uh, you see the product life cycle, like the basically the product life cycle theory is the basically the life cycle stages are there, जिसमें production locations are there, the market locations, competitive factor, production technology. The introductory phase है आपका international trade का introductory phase में you are the basically the innovation with the industry are there. आप host country में जाते हैं, innovations create करते हैं, innovating behavior के साथ जाते हैं. When you innovating behavior आते हैं तो some unique सेलिंग पॉइंट्स आपके पास होते हैं. प्राइसेस आपकी बड़ी स्टेबल या लोअर प्राइसेस पे आप चीजों को सेल आउट कर रहे होते हैं. फिर जैसे जैसे लाइफ साइकिल आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का बढ़ता है उस कंट्री होस्ट कंट्री में, तो फिर आप definitely fast growing demand, competitiveness, competitors आपके जैसे ही इंक्रीज होते हैं तो आपकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. देन यू हैव द बेसिकली द मेच्योरिटी. इंटरनेशनल ट्रेड का जो सबसे बड़ा फायदा है वो मेच्योरिटी के फेज पे है. डेफिनेटली द कंट्री ज्वाइनिंग द सिस्टम्स. कंट्री हमेशा स्टेबलाइज डिमांड चाह रही होती है. कंट्री में हमेशा इंडस्ट्रियल प्राइस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज नाउअडेज. तो जब आप No, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, सो द लॉन्गर प्रोडक्शन आ जाए. जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज. हेलो, any question from the participants? no, sir. Okay, okay, no problem. तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे थे, जिस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इसी तरह लाइफ साइकिल ऑफ द इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होती हैं. द लाइफ साइकिल फॉर द इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में हम मेच्योरिटी फेज पे थे, जहाँ पे आपकी प्राइस स्टेबिलिटी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है. आप हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं. दैट हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंक्रीज बेसिकली द इंटरनेशनल बिजनेस आर देयर. फिर एक डिक्लाइनिंग फेज होती है जहां पे आप होस्ट कंट्री को लीव कर रहे होते हैं. लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि आप डिक्लाइन प्रोडक्शन प्रोडक्ट वाइज तो डिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री वाइज या कंपनी या जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन हो चुके होते हैं तो देयर इज नो डिक्लाइनिंग इन योर कंपनी. आपकी प्रोडक्शन चेंज हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी चेंज हो सकती है, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस कंट्री से होस्ट कंट्री से आप निकल नहीं सकते. दैट्स अगेन बिगेस्ट थिंग्स आर देयर. तो ये पुट डेफिनेटली पुट डायमंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी इसने दी थी पुटर ने, माइकल पुटर ने. ईयर मुझे याद नहीं, तो वहां पे ट्रेड डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया था. से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल जाता है, आपकी कंट्री को, आपकी सोसाइटी को. वाई प्रोडक्शन फैक्टर मूव, पीपल की वजह से, लोगों की वजह से प्रोडक्शन फैक्टर मूव कर रहा होता है. कैपिटल आपका मूव कर रहा होता है. तो कैपिटल नाउ डेज पूरी दुनिया में जितना भी कैपिटल है वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो अगेन बेसिकली द अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइना फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एंड डेफिनेटली दैट इंटरनेशनल ट्रेड टू द वो पूरी दुनिया को कनेक्शन थ्रू द सीपैक कनेक्शन या किसी भी थ्रू वेज के थ्रू वो कनेक्टेड करना चाह रहे हैं पूरे कंट्रीज को, पूरी दुनिया को. अच्छा, इसमें जो की पॉइंट्स है, एक तो ट्रेड डेवलपमेंट एडवांटेजेस थे आपके. ट्रेड डेवलपमेंट एडवांटेजेस आपके पास क्या क्या हैं? उसमें ट्रेड डेवलपमेंट एडवांटेजेस में हमें
Yeah, that's the comparative advantages are there, then the competitive advantages are there. तो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे ही आपकी कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप कंट्री या किसी भी कंट्री की हम बात करें, द होस्ट कंट्री की हम बात करें, जैसे ही वो ट्रेड डेवलपमेंट ट्रेड इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली दैट इंक्रीज बेसिकली इन द सिस्टम्स आर देयर. फिर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसिंग ऑन ऑन ट्रेड. कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हो रही होती है या गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हो रही होती है आपकी ट्रेड पे. इसमें पॉलिटिकल पॉलिसीज भी हो सकती हैं, इसमें लीगल प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, इसमें कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर भी हो सकता है, जियोग्राफिकल लोकेशंस भी आपकी हो सकती है, आप ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी मोस्टली द ब्लैकमेल टू चाइना फॉर द सी पैक, आप इस तरह हो सकता है. तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ऑन ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अराइज हुआ कि व्हेन अ कंट्री शिफ्ट फ्रॉम एग्री इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो ये शिफ्ट है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग है ये पूरी. तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग में डिमांड्स ऑन द सोशल पॉलिटिकल सर्विसेज आर इंक्रीज. जब आपकी डिमांड क्रिएट होती है तो डेफिनेटली आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी से निकल के मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी या जैसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कह रहे हैं इसमें शिफ्ट हो जाते हैं. ये ये भी एक वजह हो सकती है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आप फुलफिल नहीं कर पा रहे डिमांड्स को. ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरलुक्ड कर रहे हैं, दैट्स द ओवरलुक्ड बिहेवियर आर देयर. तो ये भी एक इन्फ्लुएंस कर सकती है रिलेशनशिप्स. गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि रिलेशनशिप्स के इस तरह जो गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है, दैट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर देयर. It is depend on the basically the governmental interference are there. गवर्नमेंट अमूमन इंटरफेयर कर रही होती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉजिटिवली रिलेशन क्रिएट हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. तो ये ट्रेड कंट्रोल भी करना चाह रही होती है गवर्नमेंट, कि ट्रेड को कैसे कंट्रोल किया जाए. इस पूरी पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो एक्चुअली पॉलिसी ट्रेड को कंट्रोल कर रहे होते हैं. जो आपकी ट्रेड हो रही होती है दैट्स बेसिकली द कंट्रोलिंग द होल इकोनॉमी. तो ट्रेड कंट्रोल डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी. जो सब्सिडीज दी जा रही होती हैं या हम स्पेशल डिस्काउंट दिए जा रहे थे इंडस्ट्री को, वो इसलिए दिए जा रहे होते हैं कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही होती है, गवर्नमेंट चाह रही होती है कि हमारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में जाए या इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारी लोकल कंपनीज में आके या लोकल यहाँ पे आके एग्रीमेंट करें. जैसे आप क्रॉस नेशनल एग्रीमेंट्स कह रहे हैं, तो अभी ये क्रॉस नेशनल एग्रीमेंट्स का जो सेशन है इसमें क्रॉस नेशनल एग्रीमेंट्स है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियंस है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें एक साउथ एशिया का भी एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस है. ठीक है, एक आपका सी पैक के थ्रू भी इस वक्त अगर आप लोकली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोकली सी पैक है. फिर
आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ओपेक, ये कुछ एसोसिएशंस हैं जो पूरी दुनिया में क्रॉस नेशनल एग्रीमेंट्स को डील कर रहे होते हैं। अमूमन ये होता है कि प्रोडक्ट वाइज अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में, होस्ट कंट्री में जब भी आती है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो वो लोकल मैन्युफैक्चरर से मर्जर्स, एक्विजिशंस, या इवन द साइलेंट पार्टनर, इवन द कैपिटल पार्टनर, इवन द नेशनल पार्टनर उसको ले रही होती है। तो क्रॉस नेशनल एग्रीमेंट्स में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आर देयर। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कंट्री को भी बेनिफिट्स होते हैं डेफिनेटली, उसको कंपनी को भी बेनिफिट्स होते हैं, दैट इज द सीसी बेनिफिट्स आर देयर, द कंपनी कंट्री बेनिफिट्स आर देयर, द बोथ आर द गेन एंड लॉस पोजीशंस आर देयर। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में आई थिंक द यूरोपियन यूनियंस का जो एनेक्जर था वो, फिर एनएएफटी है, इस तरह और बहुत सारे एनेक्जर्स डेवलप हुए। लेकिन इस वक्त ट्रेड को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आर, यूएनओ उसको बेसिकली कर रही है किसी तरीके से। जो एसोसिएशंस हैं, जिस एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया एशियन नेशनल्स हैं, जिसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है, ये जो नेशंस हैं ये डेवलप कर रही होती हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज को। तो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो डिफरेंट, एक रीजन है इंटीग्रेशन अफ्रीका, जिसमें माली है, लीबिया है, इजिप्ट है, सऊदीन है, ये एक इस तरह के ग्रुप्स हैं जो डेफिनेटली डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस हैं जो पूरी दुनिया को कर रही होती है। कुछ ऑयल एंड गैस के हैं, ऑयल एंड गैस की कुछ कंट्रीज हैं जो इस वक्त जिनकी मोनोपोली है डेफिनेटली, कुछ उनका ऑयल एंड गैस का, ऑयल पेट्रोलियम का एनेक्जर्स हैं, तो दैट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये आजकल बड़ा एनेक्जर है। Basically, the WTO play a very important role for the trade association cross national agreements. Where WTO is very actively participate in the development of anything. European Union is play a very important role nowadays. जी, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका, कोई कमेंट्स आपका, तो मैं, अगर कोई कमेंट्स और क्वेश्चन नहीं है तो फर्दर वी हैव टू बेसिकली टू ओवर द सेशन आर देयर, हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई कोई और वो नहीं है तो प्लीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ओवर टू यू, हम बंद करते हैं इस रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली भेजूंगा कि आप उसे दोबारा सुन सकें। Any question about the participants? Any question from the participants? Any questions, please? If सवाल हो तो then we leave the session. No.
Okay, Ji, thank you very much. May Allah bless you. Thank you for the participation of that session. Thank you very much. May Allah bless you. Okay, Allah Hafiz.